which is exchange rate, which is sometimes simply defined as the Sure. price of the country's currency in terms of the international. So सबसे पहले the simple basics. यहाँ पे the purpose of this video is that you understand two things. कि तुमने in indicators, that is the next thing you see in this video, कि जो सारे variables हैं aggregate meaning totals of the economy. So macro analysis से आ रहे हैं. उसमें you have to remember these are known as indicators of the macroeconomy. So कभी-कभी paper में तुम्हें पूछा जाएगा what is an indicator. Indicator meaning they tell you or indicate something about the health of the economy. That is all you mean by indicator. So वो तुमने पहली चीज़ again a basic concept that you need to remember always कि and actually I have this cursor over here. These are the indicators or you say the key macro variables, and remember we also call these same things the objectives of macroeconomic policy. और उसको तुमने इस तरह से समझना है कि if these variables are telling you and indicating something about the health of the economy, then government and policymakers, of course, they try to control and influence these very variables. Now, usme we look at the detail of all of these, but it is obvious that you would want the total output to be increasing. So we'll give the name of economic growth. You would want the average price levels, remember, to be stable, not growing. We want prices to be increasing slightly, but we want them to be increasing at a stable rate. So here at this stage, just understand average price level. We are not talking about price of any one product. हम कह रहे सारे country के जितने भी products हैं उनकी average price. So now there is again a funny specific way in which we can calculate that. But here important is aggregate variable. उसके बाद similarly total employment, balance of payment has just briefly explained. Exchange rate, again remember exchange rate को हम ये मुझे तंग कर रहा है. Let's just get rid of this thing. So जो exchange rate है उसको again we are saying aggregate level variable. Why? Because exchange rate जब बदलेगा तो all the exports and all the imports prices will change. तो हम कहते हैं two different industries and sectors आ जाओ. जल्दी आओ, आज मैं जल्दी में हूँ. वालेकुम सलाम. आज मैं जल्दी में हूँ और अगर 10 बजे से ऊपर टाइम हुआ तो those who can stay please stay, those who have to leave please leave. अगर कोई दूसरी छोटी मोटी क्लास है तो please skip it. Alright, so exchange rate basically remember, just I want you to understand at this stage कि macro variable, because when it changes there are impacts that run throughout this entire economy. So we say it's a macro level variable. So that's the first thing ये तुमने याद रखना है. Because sometimes you will be asked an essay question, but more importantly, whenever you are thinking about macroeconomy में क्या होने लगे, you won't think randomly. You would think in terms of इन चीजों को क्या होने लगे. Okay? And when you think about policies of macroeconomics, you think about policies which can influence all of these things. Now, next step in understanding or setting the base is, and hopefully this goes well, and I hope this is being recorded. I really want this to be recorded. ओके, नज़र ना आ रहा हुआ फॉन्ट का मसला हुआ तो प्लीज़ डू लेट मी नो. बाकी नोट्स बंद कर दो, नोट्स नहीं लेने, जस्ट लिसन टू मी. मसला ही नोट्स के, नोट्स बंद कर दो सर. वीडियो जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी. ऑलराइट, नाउ पहली चीज़ जो तुमने याद रखनी है कि नाउ द वे वी थिंक अबाउट हाउ दीज डिफरेंट मैक्रो वेरिएबल्स आर डिटरमाइंड एंड हाउ दे चेंज, और जो भी उनका एनालिसिस है एंड द एनालिसिस ऑफ द होल मैक्रो इकोनॉमी, उसमें एट दिस बेसिक लेवल ऑफ ए लेवल इकोनॉमिक्स तुमने पहली बेसिक assumption जो है which is always very easily forgotten and which creates problems, वो basic assumption ये है कि look, you have to always remember that there are 4 sectors, or we say 4 main players in the macroeconomy. Please बातें ना करो, नहीं सुननी तो please you can leave, बातें ना करो. Let me do it for those who are interested.
सो ये ऊपर गायब हो गया वहाँ पे, बट सिंप्लीफाइंग assumption, ये सारी मैक्रो इकोनॉमी में जो कुछ हो रहा है, वी आर जस्ट गोइंग टू बी कंसर्न विद 4 मेन प्लेयर्स विच आर फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स. सो लंबा नाम हाउस होल्ड्स वी जस्ट यूज एज अ कन्वेंशन HH. एंड उसके बाद वी हैव अ सेकेंड सेक्टर नोन एज फर्म्स, थर्ड सेक्टर नोन एज गवर्नमेंट. ना लिख, मना किया तुझे मैंने. तो मेरे दिमाग में चीज़ भूल जाती है. क्या? तो मैं लिखता हूँ, याद है. अच्छा चलो लिख लो यार, तुम्हारा अप टू यू. Household firms, government, and then we have the fourth main player or the fourth main sector, which is the external sector. कोई बहुत ही ज़रूरी सवाल नहीं में आ गया तो do ask me, but otherwise as I said, let me just build the whole story. Hopefully we can do it by 10. आखिर में जितने questions पूछने होंगे पूछना. If something is really urgent, do ask me. So ये 4 sectors हैं. So that simplifies everything very very quickly. We don't have to think outside of these 4 places. उनमें से तुम लोगों ने याद रखना है कि I mean there are very I should say various different ways in which you can keep on explaining कि ये household क्या है, firm क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है. You can memorize 3 pages of notes, जितने मर्जी रट्टे लगाई जाओ, but all useless. You just need to understand it conceptually by thinking of it like this, कि micro में we would think about consumer of one single individual product at a time. कि टैक्स लगा है तो कंज्यूमर्स ऑफ दैट टैक्स प्रोडक्ट उनको क्या हो रहा है, डिमांड है तो एक प्रोडक्ट की है, सो व्हाट इज हैपनिंग टू वन कंज्यूमर्स ऑफ वन प्रोडक्ट. जब हम मैक्रो इकोनॉमी को देखते हैं तो इंस्टेड ऑफ जस्ट वन प्रोडक्ट्स कंज्यूमर, वी जस्ट ग्रुप टुगेदर ऑल द कंज्यूमर्स एंड वी गिव देम द नेम हाउसहोल्ड्स. अगेन एज आई सेड, नॉट अ फॉर्मल डेफिनेशन, but this is how you are supposed to think about it. This is how you can define it in your exam. Collectively, households define all the consumers, people who come and buy things from the economy. Average people like you and me who go and work in the morning, earn an income, कुछ बचा लेते हैं, बाकी they spend it. Households. Main role जो तुमने याद रखना है households का. Again, I mean households can do a lot of other activities. We are not going to be concerned with every other thing that they can do. We are just going to be concerned with 2 main roles of the households, which are first of all consumption. So CON, or you can just let's use the conventions, okay, you get used to it. So C is the consumption, which simply means households जो कुछ economy में खरीद रहे हैं, whether it is a service, whether it is a good, whether it is cheap thing, expensive thing, all goods and services that households go and buy, उनको हम consumption का नाम दे देते हैं. And then the second main role, जिसको हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, but it is a very important role, is that households every year, every month, every given period of time, when they earn an income, they spend and consume most of it, but do remember that they would always save some income. Now यहाँ पे we are not talking about आपकी saving, मेरी saving, किसी individual की saving. We are here talking about in the entire year, collectively, the total savings of all the households. That is what this capital S of macro means. So इनको कभी कभी हम countries private savings का नाम भी देते हैं. As a country, what are you saving every year or every given period of time, which is of course important. It's the same idea. The more you save today, the more you will have in the future to invest. So similar idea. But ये याद रखो, keep everything organized. पहला player है household, 2 ही उसके role हैं, consumption और saving. Then you have firms. Firms again, वैसे हम individual producer, individual product की बात करते हैं. Here by firms we collectively mean all the producers. Again, you can complicate this, इसको मुश्किल बना सकते हो, but useless. Just remember, firms, macro का मतलब है, we are not thinking about one individual producer, we are thinking about all the producers. हम समझ रहे हैं वो किसी तरह जादू से इकट्ठे हो गए. They are just one thing. And then firms का जो main role है, of course, is that they produce the output of the country. Now focus on the word that I have used. I'm not saying they produce a quantity of some product. I'm saying producers, these firms, they produce the total output that the country is producing. Now again, a minor secondary role of firms, but again very important. Firms जो है वो सिर्फ products बनाती नहीं है, sometimes they buy those products as well. So you have to set up a new workshop. Wages दे के लोग हायर करने पड़ेंगे. You will have to buy machines, you will have to buy furniture and so on and so forth.
सो जब फर्म्स खुद ही वो चीज़ें खरीदती हैं, प्रोडक्ट्स खरीदती हैं फ्रॉम द कंट्रीज टोटल आउटपुट दैट दे हैव प्रोड्यूस, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। सारे ठीक हो ना अभी तक? इट इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड, सो मैं इसमें आई एम कीपिंग अ गुड पेस। सो ये दो रोल इसके हो गए, एंड लेट मी मूव थ्रू स्लाइटली मोर क्विकली। गवर्नमेंट से मतलब है कोई भी गवर्नमेंट का जो रोल है, कोई भी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, मैक्रो में भी थिंक ऑफ इट एज द सेक्टर गवर्नमेंट। दो जो मेन रोल्स हैं गवर्नमेंट के जो हमने फोकस करने, दे आर, उनमें से एक बंदा है टोटली अनइंटरेस्टेड, बाकी सारे ठीक हो। I'm wondering कि सुबह 9 बजे आके क्लास में out of everybody there is one person who's totally uninterested, but I mean up to you, I won't identify you. खैर, गवर्नमेंट के दो रोल याद रखो। एक, गवर्नमेंट इकोनॉमी में स्पेंडिंग करती है, that is again remember we are linking back everything to total output of the country, उस पर ध्यान रखो। Some of it is being bought by households, we are giving it the name of consumption, some of it is being bought by firms, उसको हम इन्वेस्टमेंट का नाम दे रहे हैं। नाउ वी आर सेइंग गवर्नमेंट भी तो चीज़ें खरीदती, गवर्नमेंट बाइज द सर्विसेज ऑफ सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट बाय फर्नीचर एंड यू नो अगेन वो ऑफिस सेटअप करने के लिए व्हाटएवर दे हैव टू बाय, दैट्स अ सिंपल वे टू थिंक अबाउट इट। गवर्नमेंट जितनी भी चीज़ें खरीद रही है, जितना भी स्पेंडिंग कर रही है इकोनॉमी में, वी जनरली डिनोट इट सिंपली बाय दिस लेटर जी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। So essay में लिख रहे हो गवर्नमेंट स्पेंडिंग लिखो, but in all the other places MCQs you will see this word G, that means total demand for the country's output coming from the government. और दूसरी तरफ गवर्नमेंट as usual they put taxes. यहाँ पे just remember we are first of all talking primarily about income taxes, क्योंकि वो direct tax है, income पे tax लगेगा, all the households become relatively poor, so the consumption in the entire economy goes down. So इसलिए जब हम टैक्स की बात करते हैं तो we are talking here about income direct taxes, not strictly speaking but A level की हद तक that is how you are supposed to think about it. And यहाँ पे जब गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो in macro we also think about the government's total tax revenue जो हर साल गवर्नमेंट इकट्ठा करती है. So on the one hand the government is spending a certain amount of money on the country's output G, and on the other hand it's collecting a certain amount of revenue every year, and later you will see the difference is known as the government's budget. कभी वो डेफिसिट में, कभी वो सरप्लस में, those are the things that we will see as we go on. कितना टाइम हो गया? We are on time. थोड़ा सा स्टेमिना रखना है तुमने, okay? Things won't get difficult, but थोड़ी सी we have to build a chain of reasoning. External sector, let me just do this very quickly. External sector के जो दो रोल हैं, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ना एक्सटर्नल सेक्टर अगेन वो जो भी मैंने वीडियो में तुम्हें दिखाया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, सो एवरी कंट्री इज डीलिंग विद अदर कंट्रीज, सो समटाइम्स मनी मूव्स इन एंड समटाइम्स मनी मूव्स आउट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो उसमें हम जो एक्सटर्नल सेक्टर है, हम कह रहे हैं कंट्री लाइक पाकिस्तान, इट वुड बी डीलिंग विद मेनी डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज, बट वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन आर डीलिंग विद यूएस वर्सेस डीलिंग विद सऊदी अरेबिया वर्सेस डीलिंग विद दिस दैट इंडिविजुअल कंट्री। हम वो एक्सटर्नल सेक्टर में भी ग्रुप टुगेदर ऑल द एक्सटर्नल कंट्रीज एंड वी कॉल देम एक्सटर्नल सेक्टर। अगेन बेतहाशा फर्क इंटरेक्शंस हैं, वी विल लुक एट सम ऑफ देम, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, बट प्राइमरीली पाकिस्तान समटाइम्स सेल्स गुड्स टू फॉरेनर्स, सो वो एक्सपोर्ट्स हैं, एंड देन पाकिस्तान एज अ कंट्री एवरी ईयर बाय अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो उनको हम imports कह देते हैं। So those are the two main roles of these sectors. कोई question हो अभी तक तो मुझे बताओ। Okay. Now again the important thing जो मैं तुम्हें इतना जोर दे रहा हूँ कि आज की क्लास ना मिस करना, these are extremely easy things. मेरा problem with notes is कि वहाँ आधे सफ़े में ये चीज़ ख़त्म, तुमने रट्टा लगाया टेबल का and there you go. इसकी बेसिस पे you have to keep on thinking about the entire macroeconomics, चाहे A2 है चाहे A1 है चाहे वो भी है. So don't forget these things. इतनी जल्दी नहीं, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, ये सेइंग देयर आर 4 सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, मीनिंग 4 प्लेयर्स, इनके अलावा हमने कुछ नहीं सोचना। हम कह रहे हैं वन ऑफ दोस 4 प्लेयर्स इज फर्म्स, जिससे मतलब है ऑल द प्रोड्यूसर्स ग्रुप टुगेदर। हम कह रहे हैं जो मुल्क में फर्म्स है ना, दे हैव 2 रोल्स, या तो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं व्हिच इज देयर प्राइमरी रोल, कभी कभी दे बाय सम ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट दैट इज एग्जिस्टिंग इन द इकोनॉमी। सो हम टोटल आउटपुट से सब कुछ को लिंक कर रहे हैं।
So जितना भी प्रोडक्ट फर्म्स खुद से खरीद रही हैं, मे बी 2 chairs and 3 tables, तो हम कहते हैं दैट इज द इन्वेस्टमेंट. सो आगे जब भी हम स्पेंडिंग की बात करेंगे ना इकोनॉमी, ओके, फर्म्स आर स्पेंडिंग 200 बिलियन more dollars, so we will immediately say investment has increased. और हम इन 4 प्लेस का सोचेंगे and we'll think about total countries up. So that is the simple idea. So investment को तुमने, there is a specific precise way and which is a very simple way. उसको इस तरह से तुमने याद रखना है. कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ इसके अलावा. चलो, अब जो आगे हमने काम करना है, we are going to talk about something known as circular flow. Remember what it really is कि जो हम imaginary world बना रहे हैं of macroeconomics, उसमें हम कह रहे हैं जो 4 players हैं, household, firms, government and the external sector, the way we think about how they interact with each other and therefore determine कितनी output बननी है, क्या कुछ होना है, उसके लिए जो the basic conceptual framework to think about their interaction and how they are linked with each other, उस thought process को कह लो, we call the circular flow of the macroeconomy. We can think about circular flows in many different ways. So book उठाओगे, notes उठाओगे, I can't say किस book में किस तरह से किस डिटेल में समझाया जा रहा है, but here I want to keep it as simple as possible. So उसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे in 2 different ways, but I mean just try to pick up the broad story. Reality ना ढूंढना इसमें, it's again all fiction. करना हमने क्या है कि इस circular flow के through we will learn first of all something which is known as the leakages withdrawal model, वो हमने आज ही ख़त्म करनी है. Then we will learn about something known as national income accounting, national income identity, basically which is a fancy word for the method in which we can measure a country's GDP. So हमने दोनों इस circular flow के साथ इसी क्लास में लिंक करने हैं, and then through the same circular flow we will see कि ये ADAS diagram क्या है, which is the main thing that we want to understand in this entire macro course, ADS model. उससे हमने सारी economy चलानी है, and for that we have 24 minutes, which I think would be enough. So circular flow model, this is how you think about it. हमारे पास 4 sectors हैं, the households, the firms, the government and the external sector. So सबसे पहले we start off with just household and firms. Now here is an MCQ thing जो तुम्हें पता होनी चाहिए. हम जब सिर्फ 2 sectors choose कर रहे हैं out of 4 to conduct the analysis, so we say we are looking at a 2-sector economy. इनमें से 3 सेक्टर्स पिक कर लोगे, we say we are looking at a 3-sector economy. So वो MCQs के लिए ज़रूरी है, because कभी-कभी तुम्हें एग्जामिनर कहेगा in a 2-sector economy without government and without external sector. So immediately this thing should come to your mind कि हम सिर्फ 2 प्लेस का सोच रहे हैं, हमने आखिरी 2 निकाल दिए. Okay, so again basics. A lot of questions वो सिर्फ इन basics की वजह से तुम्हारे आसान हो जाएंगे. 3 sector कौन सी वाली होगी? कोई भी 3, any 3. कॉम्बिनेशन कोई भी पिक कर लो, 3 प्लेस 3 सेक्टर्स आर इन्वॉल्व, हम कहते हैं 3-sector इकोनॉमी. यूजुअली जो टर्मिनोलॉजी होती है ना, if you're not considering the external sector, तो हम कहते हैं 3-sector closed economy, this becomes a 4-sector open economy. या यूजुअली हम कहते हैं 3-sector economy without government or with government. That is basically it. Okay, क्योंकि firms और household होने ही होने हैं, so that is the basic structure that we start off with. So एक तरफ let's draw households over here, H for households, और ये नज़र ना आएगा कुछ तो प्लीज़ मुझे बताना है तुमने. एंड देन यू हैव फर्म्स ऑन द अदर हैंड. नाउ लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल. हम अज्यूम करते हैं कि इन मैक्रो इकोनॉमी देयर आर जस्ट 2 मार्केट्स. एक को हम कह देते हैं द मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ इसमें अगेन इमेजिनरी वर्ल्ड, द वे यू थिंक अबाउट इट इज इस इकोनॉमी में जो कुछ भी बन रहा है, वट एवर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इट इज़ वॉट all to this market जहाँ पे ये खरीदा और बेचा जाता है. So we have just one market to take care of, the goods and services market of the entire country. और दूसरी तरफ हमारे पास एक है factor market. Now by factor what we mean here are the factors of production, land, labor, capital, enterprise, मुल्क की जो 4 resources. And what we mean by factor market is, and let me actually build the circular flow as we talk about it. ये जो household है ना, and that is the next assumption, that these households they own all the resources of the country. Again assumption है, इसमें हमने बहस नहीं करना. We assume कि जितना भी land, labor, capital, enterprise
it is owned by these households. सारी resources households के पास है, not any of the other sectors. And the simple idea is कि ये households जो हैं, they go to this factor market to supply or provide their resources. यानी लोग जाते हैं to look for jobs कि I want to sell my labor in this factor market, मुझे उसके बदले में reward wage चाहिए. इसी तरह if somebody owns land, he goes to this factor market to give away his land on rent and so on and so forth. But again, let's keep it very very simple. We can keep on talking about it, but idea is कि जो resources हैं household से firms के पास जाएंगी. Here, who will come to buy them? The firms. Why? Because these firms want to produce. उसके लिए they need land and labor and capital and enterprise. So firms will start buying these resources through the factor market. So first idea, resources flow from households to firms in this anti-clockwise direction. Firms convert them into goods which are then bought to this goods and services market. और यहाँ पे important thing coming up, यहाँ पे we assume that most of these goods are bought. कौन सा सेक्टर खरीदते हैं? What do you think? Households. Households we assume buy most of the country's output. Okay, so यहाँ पे इधर एक एरो बना देते हैं. And what you need to remember is कि household जितना भी, as we said, whatever household is buying out of the total output of the country, that is given the notation or the name of consumption. So ये जो goods household खरीद है, that is consumption. But then do remember कि ये जो बाकी तीन sectors हैं, we have to write them down over here. So firms को we, and this is my way. Again, you won't find it in the book कि firms दो दफ़ा बनी हुई है, but I mean I'm just trying to tell you here कि firms के दो functions हैं. So on the one hand they are producers, but equally importantly उनको right side पे भी रखा है कि they have the role कि they also buy some of this country's output. So जो firms buy करेंगे, we have already, इसीलिए हमने ये special नाम दिए थे, that would be known as investment. So don't think in financial terms कि plot ले रहे हो तो महंगा हो जाएगा. Investment, we are not talking about that investment. Firms buying country total output, that is the investment we are talking about. उसके बाद government आ जाती है and government buys whatever they buy, उसको हम G का नाम दे देते हैं. And then your external sector, whatever that buys, you give it the name of exports. So that is why it is known as this circular flow. Resources move from households to factor markets, through that they move to your goods market, and in that circle they come back to these four sectors. That's the first thing. Now यहाँ पे कोई problem अभी तक? Anything you want to ask? Good. हाँ, एक्सटर्नल सेक्टर के लिए इंपोर्ट भी हो सकती है, डालेंगे बाद में डालेंगे, अभी सिंपल रख. अभी मैं सिर्फ चाह रहा हूँ तुम लोग ये सोचो total output of country, who is creating and bringing demand for that. चार सेक्टर हैं, उनके सबके नाम याद रखने हैं. Now यहाँ पे the next concept, again broad principle concept, पूरी डिटेल नहीं भी समझ आती तो let's start trying to understand this thing, real analysis. Now what we have just done is the flow of real variables in the economy. Real meaning that we are here talking about the flow of actual number of people who are getting a job, actual number of tractors that are being rented out, the actual units of the different total products that are being produced, and so on and so forth. So हम कहते हैं real variables की बात कर रहे हैं. Now real and nominal हम बहुत से senses में use करते हैं, but here what we mean is कि as opposed to this real clockwise flow of goods and services and resources in the economy, we can also think about, और मुझे यहाँ पे real को white में करना चाहिए था. So this is the real flow. We can also think about nominal flows. ये हमारा circular flow बन गया, then we won't be left with a lot. Nominal flow का क्या मतलब है कि when you are buying goods you will have to pay for them. And whenever in macroeconomics we talk in terms of money and value, that is instead of saying two chairs, if we say chairs की कीमत 20 रुपए है, so इसलिए two chairs की total price 40 rupees है. So rupee वाली बात is the nominal analysis, two chairs quantity वाली बात is the real analysis. So ये हमने real flow of the macroeconomy बनाया है. Now with the same basic concepts we can also work out the nominal flow which will be in the opposite direction. So वो nominal flow बनाने के लिए let me just, if I can get my eraser back, yes I can.
मैं ये वाइट एरो शेरो सारा सर्कल ख़त्म कर रहा हूँ. जस्ट रिमेंबर द सिंपल आइडिया. ये गुड्स की फ्लो है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट वी जस्ट डिस्कस. बट उसको डिस्कस करते हुए ऑल द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड अबाउट द 4 सेक्टर्स, द CIG और ये सारी चीज़ें, दैट स्टिल होल्ड्स ट्रू. सिर्फ हमने बदलना क्या है कि nominal analysis, which we will do in blue now, would mean, let's start from this right side over here. There are 4 sectors who are buying the country's total output. Some of them is from the households in the form of consumption. So जितने भी गुड्स खरीद रहे हैं उनकी प्राइस पे करनी पड़ेगी उस सर्टेन टोटल मनी वैल्यू. सो दैट मनी वैल्यू वुड नाउ बिकम नोन एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. So you can already see कि हम consumption real या consumption expenditure interchangeably use करते हैं. In one direction you are saying the quantity of consumption, in the other direction you are saying the money that would be paid to buy that quantity or value of that. So एक यहाँ से consumption, the money households are paying, वो goods market की तरफ जाते हैं. Then the firms who are buying goods, which is known as investment. So yeah, investment expenditure flows in the anti-clockwise direction. Similarly, the government expenditure. And finally, exports. यानी foreigners जितना भी पैसा exports पे लगा रहे हैं, we are saying that is being spent on the goods market. So nominal flow. Now the important question here is कि ये total spending है economy में. There are 4 sectors. And if you count the aggregate demand or spending of each of these 4 sectors, add them all up, what you have here, CIGE, is the country's total aggregate spending on that country's total output. जिसको हम aggregate demand भी कह सकते हैं. Soon we will call it aggregate demand. इसमें there is simple complication. ये exports की बजाय, as you said, it is net exports. Export में net import. It's a small little thing. वो मैं तुम्हें आगे जाके clear करूँ. I don't want to mess up your concepts at this point. Now, idea, the principle that you now need to understand, important one is कि जो total spending है, total aggregate demand है, CIG plus E, all of it. How much will be it? Will it be? Well, that depends on how much output your country has produced. Okay? यहाँ पे, again simplifying assumption, you assumed your country is producing just 2 chairs, 2 tables, and price of chair is, let's say, 10 rupees each, and price of table is 40 rupees each. That is the output that is being produced in this market. So ये chairs की total price is 200 or 20 rupees, or tables की total price is 80 rupees. So we say 100 rupees is the total market value of the output that is being produced. So this total spending will be equal to that same 100 rupees. या 100 की जगह let us just assume कि total market value जो है of all the products when you calculate that, so let's say is 20 rupees. Again, to keep things simple. So हम कहते हैं spending भी 20 rupees की होगी, the sum of all of this. And then ये 20 rupees कहाँ जाएंगे? They will keep on flowing, this time in the anti-clockwise direction. The firms will receive these 20 rupees in the form of revenues. कुछ उसमें से they will keep as profits. The rest they will use to pay their cost of production. That is, they will pay wages and rents and interest on whatever factor resources they are buying from this market. And this income will then reach back to these households. And hence the name circular flow. कि अगर नॉमिनल टर्म्स में भी देखो तो द टोटल स्पेंडिंग इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू विच बिकम्स इनकम विच कम्स बैक टू दिस थिंग. क्लियर अभी तक? सही है. सो रियल भी हो गया, नॉमिनल फ्लो भी हो गया. कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ. यू विद मी ऑल ऑफ यू? ठीक है. थोड़ा से की खैर है, आई मीन थोड़े से की बिल्कुल खैर है. हाँ, अच्छा. सो ये हमारा रियल और नॉमिनल हो गया. नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि ये सारा जो एनालिसिस है, द सर्कुलर फ्लो, और ये अगेन समथिंग दैट यू विल बी टेस्टेड इन एमसीक्यू और ऐसे, इसको फ्लो कॉन्सेप्ट कहते हैं. ये जो मैक्रो इकोनॉमिक का सर्कुलर फ्लो है, मैक्रो में यू विल सी इट इज सेड दैट इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट. ऑल दैट मींस इज कि ये सारी कहानी जो है, इट इज प्लेइंग आउट एवरी पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर, कि पूरे साल में कितनी आउटपुट बनी थी, कितनी टोटल स्पेंडिंग हुई थी, which then flew back in this circular way back to the households in 2020, let's say. Flow concept means कि फिर 2021 में you start again. ठीक है, वहाँ पे इकोनॉमी एक पॉइंट पे रुकी थी. Now for the next year we will see all of these things again. कि अगला सर्कल क्या चलता है, फिर अगला सर्कल क्या चलता है.
So that is the meaning of your flow concept. तो सर ये यानी कि हर साल ये हर साल ये रिपीट करेगा. और इक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या है? In equilibrium, we say the total spending of the economy will be equal to the value of output, which will be equal to the income. Yani 20 rupees will be spent on 20 rupees worth of goods, so 20 rupees will become income, and then in the next year, the same thing will happen. 20 rupees will be spent on 20 rupees of goods and 20 rupees of income. Circular flow. So हम कहते हैं इस मुल्क के circular flow का जो size है ना, that is 20 rupees. GDP is 20 rupees, income is 20 rupees, total spending is 20 rupees, the size of the economy circular flow is 20 rupees. Bigger, richer economy means they must be producing more, so more value will be created, more spending will be done, more incomes will be generated, so the circular flow will expand. Huh? Increase or decrease total. हाँ, total. Increase decrease फिर कैसे डिस्कस करेंगे स्टेट? अभी नहीं कर रहे हैं ना यार, पहले दिन ही तो सब कुछ नहीं करना. मैं जो बता रहा हूँ समझ पा रही? वो समझ गया. अच्छा, उसको छोड़ दे के फलानी चीज कैसे करेंगे, सब कुछ हो जाएगा. ये 3 चीजें समझ आ गई. जी सर. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्कुलर फ्लो का. फ्रॉम हियर, एज आई सेड एट द बिगिनिंग, इधर से हमने अब 3 चीजें निकालनी है द सर्कुलर फ्लो. वी हैव टू वर्क आउट, as I said, something known as the leakages withdrawals approach or equation or theory. वो अभी मैं तुम्हें करवाऊंगा. Again, it's a major topic. Don't mistake it कि 5 मिनट में हो गया था. It is a topic that will come in your MCQs. It is a topic that will be tested in A2 essays. But यहाँ पे अभी हमने उसको ख़त्म करना है. Then national income accounting, I told you कि उसके बारे में हमने करना है. So वो भी अभी हमने ख़त्म करना है. So next 18 minutes are important. And most importantly, I hope we get to that ADS diagram. How is this entire circular flow linked with it? Micro macro का आपस में link है. So let me go through that quickly. I don't think I can go quickly through leakages withdrawal. मैं simply जल्दी से चलता हूँ. ना समझ आई तो मुझे बता देना. Otherwise let me try to go quickly. Leakages withdrawal और ये जो हमने national income accounting की बात की है. To understand that through this basic circular flow, we need to bring in one reality कह लो या one complication कह लो, which is very very simple to understand based on if you have understood it till far so far. Assume करो कि economy 20 rupees के circular flow में. Now we are saying हर साल 20 rupees will be spent, total spending 40 rupees will be the value, 40 rupees will be the income, it will continue. Now let's assume एक साल शुरू होता है, this 20 rupees flows and reaches these households. Remember, मैंने शुरू में तुम्हें कहा था 2 चीज़ें. एक चीज़ मैं तुम्हें एक्चुअली बताना भूल गया था. Let me tell you before I move on. कि जो total spending है ना, CIGNX और CIGE at this stage. I said out of this consumption coming from the household is the major component. Remember, ठीक है? उसमें याद रखो कि since this is the major component, so we say yes, total aggregate expenditure or demand is CIG plus E, but उसमें से C is the main component, whereas I plus G plus E, the sum of these 3 जो secondary sectors हैं जो demand लेके आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं injections into the circular flow. Injection का मतलब क्या है कि household और firm की game चल रही थी, उसमें these 3 other sectors when we fix हो गए and they are injecting more demand and more flow and more money into the circular flow. So hence the name injections. Important thing to remember. Total aggregate demand is the sum of all of the 4 sectors demand. It is the sum of CIG plus E. But we are saying from within this total aggregate demand, this part together is the injections. This component is the main component of your country's total aggregate demand. वो क्यों यूजफुल है? बिकॉज ये जो आप कॉम्प्लिकेशन हम क्रिएट करने लगे, लेट मी गेट बैक टू दिस. 20 रुपीज फ्लो होते होते इनकम आ गई. हाउस होल्ड्स, आई सेड एक तो कंज्यूम करते हैं, दूसरा फंक्शन मैंने क्या कहा था हाउस होल्ड्स का? दे सेव. सो एवरी ईयर 20 रुपये की इनकम आई है, सम ऑफ इट वी से विल लीक आउट ऑफ दिस फ्लो ऑफ इनकम एंड स्पेंडिंग. सो लेट्स अज्यूम कि जो लीकेज है दैट इज 2 रुपीज. फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हो कि उनके रोल को छोड़ो. गवर्नमेंट के मैंने 2 रोल बताए थे. वन इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, व्हाट वाज द अदर रोल? टैक्स. सो गवर्नमेंट के पास भी इस इनकम में से सम ऑफ द इनकम आउट ऑफ दिस फ्लो लीक्स आउट, क्योंकि हाउस होल्ड्स ने टैक्स देना होता है. एक्सटर्नल सेक्टर के थ्रू क्या लीकेज होगी? इंपोर्ट एक्सपोर्ट. सोच के बोल. एक्सटर्नल सेक्टर की क्या? एक्सटर्नल सेक्टर देखो,
ये फ्लो हम कह रहे हैं मनी स्पेंट एंड अर्न एंड फ्लोइंग विद इन पाकिस्तान मार्केट। मेरे पास इनकम पहुंची है, आउट ऑफ दैट इनकम इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट बैक इनटू द स्लो मैं जापानी गाड़ी खरीदा था, सो दैट इंपोर्ट इज अ लीकेज। ठीक है, सो दैट इज हाँ एक्सपोर्ट छोड़ देना, आगे क्यों भागते हो, मैं जो बता रहा हूँ समझ आ रहा है। हाँ सर वो इंपोर्ट छोड़ दो एक्सपोर्ट को ना, अब सारा कुछ इकट्ठा हो जाएगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये तुमने रट्टा लगा लेना है, लीकेजेस विड्रॉल्स अप्रोच जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ उसका रट्टा लगा लो। लीकेजेस, टोटल लीकेजेस फ्रॉम द एंटायर इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मैक्रो लेवल कॉन्सेप्ट, आर इक्वल टू द नेशनल सेविंग्स plus the total amount of taxes that are collected in that country in that year, plus the total amount of imports. That is your total leakages. उसकी importance समझने के लिए let's assume some more numbers here. So let's assume कि हमारे पास tax है 3 rupees and यहाँ मैंने leakages लिख दिया, I should have written imports, और imports हैं let's say 3 rupees as well. सो टोटल लीकेजेस, ये जो यहाँ पे हम सम कह रहे हैं, वुड बी 2 + 3 + 3 और कितना बन जाएगा 8 रुपीज़, विच मीन्स 20 रुपीज़ ऑफ इनकम केम टू दीज हाउस होल्ड्स, 8 लीक हो गई। हाउ मच वर दे लेफ्ट विद, जल्दी करो, 20 rupees of income reach these households in the circular flow, 8 has leaked out in the form of saving taxes, 12. We assume all of that is spent. And that gives us a condition कि जो circular flow है ये equilibrium में सिर्फ तब होगा when these injections are equal to these leakages। वरना क्या होगा, let's assume there are no injections, आप कहोगे 20 रुपए पहुंचे थे, 8 लीक हो गए, 12 रहे, so less demand is there, less would be produced, ये सर्कल कम होगा, इनकम भी कम होगी, कम प्रोड्यूस करने के लिए you have to hire fewer people। अगले साल फिर लीकेजेस हो जाएंगी, उससे भी कम स्पेंड होगा, सर्कल will shrink and disappear। Obviously that does not happen, क्योंकि क्या होता है when the economy is in equilibrium, और इस कंडीशन का तुमने रट्टा लगाना है। These leakages 20 में से जो 8 निकलने, when they are equal to the total injections, यानी I + G + E भी अगर 8 है, that is where we say the circular flow, the macroeconomy will be in an equilibrium। 8 लीक हो गया, 8 आ गया, प्लस 12 कंजम्पशन, so 12 + 8 again 20 is spent, 20 of income will reach here, 8 will again leak out, 12 बचेगा वो कंज्यूम हो जाएगा, प्लस 8 of injections, economy stays in equilibrium when we say leakages are equal to injections। और injections याद रखो I + G + E, and again the even more important thing to remember, यहाँ पे confuse ना हो जाना, injection withdrawal theory, उसमें ये जो इंजेक्शन है, we are just saying total aggregate demand is something else, it is the demand of all the 4 sectors। ये इंजेक्शन क्योंकि main demand is from consumer households, so ये secondary demand समझी जाती है, we call it injections। ये लीकेजेस हैं, when they are equal, the economy is in equilibrium, you have this identity, forget about injection withdrawals। इसके बाद सिर्फ इस काबिल हो के पेपर में लिख सकोगे इंजेक्शन विड्रॉल के हैं, so if you know the circular flow, I assume that would be easy। उसके बाद इस चीज को तुमने भूल जाना है। और एक और चीज जो यहाँ से तुमने निकाल लेनी है अभी तक जो सर्कुलर फ्लो का एनालिसिस है, दैट इज समथिंग नोन एज दी, क्या टाइम हो गया, 10 have 10 minutes। मैंने तुमको कहा था जिसने जाना हो चले जाओ, 10 मिनट रुक सकते हो तो रुक जाओ, आई विल कंटिन्यू फॉर 10 more minutes। अभी 48 मिनट्स हुए हमारी क्लास को, वैसे घंटे का स्टैमिना होना चाहिए तुम्हारा। लीकेजेस इंजेक्शन क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो मैं तुम्हें नेशनल इनकम अकाउंटिंग कह रहा था, द रीजन व्हाई आई वांटेड टू डू एवरीथिंग टुडे, इतना समझ लिए, द नेक्स्ट स्टेप टू गेट टू द थिंग वी नीड इज रियली सिंपल। नेशनल इनकम आइडेंटिटी तुम्हें सिर्फ ये कहती है कि व्हेन दिस मैक्रो इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो इज इन इक्विलिब्रियम, total aggregate expenditure CIGE, the expenditure or demand coming from all the 4 sectors, that is going to be equal to the country's value of output that it is producing। इस value of output को हम GDP कह देते हैं, and then this last part of the circular flow tells us that will also be equal to the country's total national income। So a big result, and this whole identity is your national income identity।
The reason why कभी तुम GDP को कह देते हो it's the total output, कभी तुम कह देते हो it is the total spending, कभी तुम कह देते हो it is the total national income. The reason why GDP is so important, GDP बढ़ेगा, total aggregate spending बढ़ेगी, मुल्की total aggregate income बढ़ेगी in equilibrium. यहाँ पे these three are also known as the three different ways in which you can calculate the country's GDP. सारी स्पेंडिंग ऐड कर लो, डायरेक्ट मार्केट वैल्यू निकाल लो कि इनपुट से इनकम ऐड कर लो. Another question you will get net exports. Three different approaches to measuring GDP. तुम्हारा सारा सिलेबस का जो कंपोनेंट है ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इट्स एज सिंपल एज दिस. किताब नोट्स खोलोगे पागल हो जाओगे, बिकॉज टू सिंपलीफाई दिस मैं पागल हो गया था, बिकॉज इट कैन गेट मिक्स्ड अप. ना पढ़ना बुक से, ना पढ़ना नोट से. दिस इज द वीडियो, अल्लाह करे रिकॉर्ड हो रही हो, जस्ट गो थ्रू इट, रिवाइज एवरीथिंग. अब आखिरी 10 मिनट, होपफुली आई वोंट ब्रेक माय प्रॉमिस. 6 मिनट रह गए. लेट मी एटलीस्ट स्केच आउट ADAs. I wish I could have reached it today. Now ADAs 6 मिनट प्लीज ध्यान देना. That was the goal, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा कोर्स ADAs पे चलना है. ये दोनों चीजें पहले लेक्चर में डन विद, ओवर. माइनर थिंग्स, इनमें घूमना नहीं है तुमने. नाउ अब ये जो ADS मॉडल है, दैट इज अगेन a way of looking at and analyzing the macroeconomy through this circular flow. इसी तरीके से, and ADS model agrees with most of the things that we have said. But ADS model looks at this entire thing in a much more simple and a much more useful way. So ADS का जो मॉडल है, इब्राहिम बोर हो रहा होगा, बिकॉज इब्राहिम मैंने तुम्हें ये O लेवल में बार बार पढ़ाया था, बट यू वर नेवर इन द मूड. होपफुली आज समझ जाओगे. इब्राहिम में से बहुत डांटे खाएंगे. मेरा बेटा ना, बेटा उसका नाम इब्राहिम है. सो व्हेन आई टॉक विद यू तो मेरे से कंट्रोल नहीं होता. Anyhow, let me take my last 5 minutes. ADAS का मॉडल इसी सारी चीज को देखता है, but it says that look, you don't need to complicate things so much. हमने नॉमिनल और रियल की बात की थी, हम नॉमिनल फ्लो घुमा रहे हैं उस वक्त से. सॉरी, नॉमिनल इज लाइक दिस. लेट्स गेट बैक टू रियल फ्लो. लेट मी कीप इट वेरी वेरी सिंपल. रियल फ्लो की टर्म्स में बात करते हुए, लेट मी गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस. 2 मिनट लगेंगे. अब हम फिर से रियल फ्लो करने लगे. गुड्स और सर्विसेज और रियल आउटपुट. वेरी वेरी सिंपल आइडिया. ADS का मॉडल कहता है कि लुक, स्टार्ट विद द फर्म्स. Firms are responsible for producing the country's total output and bringing it to this goods market, right? ADS का मॉडल उस total output produced by the firms को कह देते हैं aggregate supply of the country. Whereas इस goods market से households, firms, government and the external sector, वही 3 नाम उनकी डिमांड के, they buy the total output from these goods market. So जो CIG plus E है, जिसको हम NX बना देंगे, this part is known as the country's aggregate demand. ADS model agrees कि हाँ, in equilibrium, aggregate demand coming from the 4 sectors in the shape of CIG NX, that will be equal to the total aggregate supply that the firms are producing in equilibrium. But then aggregate demand can always change. उसका कोई भी component change हो सकता है. Maybe households for some reason start consuming more, firms start investing more. दूसरे मुल्क में वो तुम्हारे साथ trade करने लगे, then they start buying more exports. So AD can change, that will change the equilibrium. Similarly, firms आज equilibrium में they are producing a certain output. Tomorrow they may decide to produce some other output. So aggregate supply can also change. And this is where this entire thing starts getting very, very dangerously close towards micro. जिस तरफ मैं तुम्हें लाना चाह रहा था. Micro में you were observing the market of one product such as cars, और आपने वहां पे y-axis पे ली थी quantity, and you were thinking कि सिंगल प्रोडक्ट माइक्रो, प्लीज फोकस, जो भी 2 मिनट रह गई. सिंगल मार्केट, यू आर थिंकिंग इस प्रोडक्ट को लेने के लिए उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर है
In equilibrium, they will buy what the producers of that single product are selling, but these consumers may want to buy or decide to buy any amount. और फिर हमने कहा था, okay, what will influence how much they buy? हमने कहा था, the main factor is price. बहुत सी चीजें, main factor is price. So price and what consumers want to buy, हमने उस relationship की diagram बना के we gave it the name of demand of one single individual product. Clear? यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि okay, what is the total amount of the country's total output, the aggregate demand that all the sectors want to buy. हम कह रहे हैं again there are a lot of things that can influence that, but यहाँ पे पहली चीज x axis पे you have total output or you have GDP that the demand side these four sectors want to buy. हम कह रहे हैं lot of factors that will influence it, but the main one is the country's price level. Remember, ये प्राइस लेवल और प्राइस, ये मार्स और अर्थ का फर्क है. Prices of one product, we are talking about micro price level, we mean the average prices. क्या हो गया? मुझे बस ये चलो सर ने बताया.